बताइए। हाँ, भाई मैं तो हूं ना वहां। हाँ, डॉक्टर शिव स्वरूप। Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। Sir, I came out to call you. So nice of you, sir. Thank you very much. We will start it. Yeah, our students also joined. Few students and both the experts. They are here. I request the college to start. Lord Krishna defines Lord Krishna defines yoga as a balanced state of body and mind. Yoga is balanced state of emotions. Yoga is a balanced state of thoughts and intellect. And yoga is a balanced state of behavior. It is to maintain the equilibrium of a mind in any situation. Good morning, all of you. I am Dr. Tushar Tale, Assistant Coordinator, IGNOU Study Center 36029, Nagpur. I welcome Honorable Vice Chancellor, IGNOU, Professor Nageshwar Rao sir, Pro Vice Chancellor, Professor Satyakam sir, Professor Mohapatra sir, Director RSD, Dr. UC Pandey sir, Senior Regional Director Dr. P. Shivswarup sir, Dr. Radhika Vadalwar madam, Dr. Alka Bindakar madam, expert for today's session, Dr. Venkateshwar Lu sir, Assistant Regional Director Nagpur, teachers, and my dear friends on national webinar on yoga as a stress buster. Today we have gathered here not only to celebrate the World Yoga Day, but also to cultivate health lifestyle. Let us begin our day by IGNOU Kulgit. नको इथेच बस पडते आवाज मोठा होतो तुझं काही नाही ना त्याने लावलेलं ते कानाचे वस्तू ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की, ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय, यह जन जन का विश्वविद्यालय।
जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। To give brief background of this day, International Yoga Day was proposed by none other than our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, at United Nations General Assembly in 2015. The International Yoga Day was observed on 21st June 2015. The response received was massive, and since then every year 21st June was observed as International Yoga Day worldwide. The Union Ministry of Ayush has Yoga for Humanity as the theme for International Yoga Day 2022. Prime Minister Narendra Modi ji announced in his monthly Mann Ki Baat address the 8th edition of International Yoga Day of Yoga will be organized on 21st of June, with the main event being held in Mysuru, Karnataka. Modi ji also urged Indians to take a part in the celebration with enthusiasm. Welcome address. Now I request our Senior Regional Director, IGNOU Nagpur, Dr. P. Shivswarup sir, to deliver the welcome address and elaborate the objectives of today's webinar. Namaskar. Namaskar. I welcome you all. I welcome you all to this National Seminar cum Webinar on Yoga as a Stress Buster. At the outset, I welcome Professor Shrikant Mahapatra sir, the Pro Vice Chancellor of IGNOU New Delhi. Thank you very much, sir, for sparing your valuable time to be with us. We are inspired with your presence, sir. I also welcome our Honorable VC sir, Professor Nageshwara sir, and Honorable VC Professor Satyakam sir. He said he may join at a later stage. And I also welcome Dr. UC Pandey, Director of RSD, and both the experts, Dr. Radhika Sarvesh Vazalwar from Nagpur on my right side, and Dr. Alka Mayur Hevandkar from Mumbai. Thank you for joining us. I also welcome my other colleagues, Dr. D.R. Sharma, Dr. Saunel, Dr. Krishna Rao, and other regional center colleagues sitting here in this room, and all the student friends. You know, the Yoga Day is celebrated on 21st June every year, but this time the university has decided to have it a month-wise celebrations, with each regional center was assigned to organize webinar, seminar, or activities on the specified dates. So on this day, we are conducting this Yoga as a Stress Buster. We have two experts with us. They will tell us about the topic, and also they will show us some small techniques for working people how to release stress while sitting in your office chair. So that will be useful workshop like thing. And also, as per our practice at Nagpur Regional Center, we want our students' active participation in such activities
Not that many will be watching the program through Facebook and YouTube, but we invited our yoga certificate program in yoga students. We talked to every student who is interested on this topic, and finally 4 students, they shown interest from Jyoti Das Konwar from Mumbai, Rachna Bambode from Nagpur, Ritu Sahu from Pune, and Shilpa Khandelwal from Amravati. They will be joining us online, and I welcome our student friends also. And so at this, I will stop talking, and we will listen to the experts. And we have Professor Mahapatra sir, who had a rich experience at Orissa State Open University as Vice Chancellor, and before that at IGNOU national level, various levels. Sir, we are honored with your presence. Sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your motivational, wonderful words. Now I request Honorable Pro Vice Chancellor, Professor S.K. Mohapatra, sir, to address our esteemed participant of this webinar. Over to you, sir. Thank you. Namaskar and very good morning to all the participants. Dr. Sivaswarup, our Senior Regional Director at Nagpur, Dr. D.R. Sharma, Senior Regional Director at Pune, our colleagues at various regional centers who are participating, the coordinators, resource persons who are here to give demonstration of yoga and to tell us how yoga is good for our health, and most importantly, the students who are also participating and who will also be giving some demonstration of yoga today. Friends, I am very happy that all the regional centers of IGNOU are organizing seminars, webinar, WhatsApps, live demonstration on yoga to commemorate the International Yoga Day on 21st of June, which is approaching. Yoga is deeply rooted in our culture, deeply rooted in our value system, deeply rooted in our educational system, and deeply rooted in the Indian ethos. It is part of our Indian traditional knowledge system. And the Gurukul culture that was there in the traditional ancient India. We all know that yoga was part of the curriculum, part of education, part of physical exercise, part of spiritual exercise, part of mental exercise, and part of collective activity. And the knowledge on yoga was transmitted from the guru to the shishyas. So this is our traditional knowledge system, which talks about purifying our mind, purifying our body, and purifying our soul. It has positive impact on mind, body, and soul. So therefore, the traditional gurus in Indian Gurukulas were teaching yoga to their students, learners. Now, after a long century, we are again talking about yoga, not only in the Indian level, but at the international level. The United Nations General Assembly has accepted it unanimously. The yoga is better and good for the entire human community. So therefore, the General Assembly since 2015 is celebrating
International Yoga Day across the globe on 15th of June. So I am very happy that Government of India's initiative, our Honorable Prime Minister's initiative, has resulted in transmitting Indian knowledge at the global level. Otherwise, people say that we only consume knowledge, we don't transmit knowledge, we don't produce knowledge. But knowledge in the field of art, culture, yoga, Indian traditional system of medicine, Indian architecture, Indian culture, were so important that in Taxila and Nalanda, students and teachers used to come to learn the Indian knowledge system. So now time has come under the National Education Policy 2020. We have taken a place to take Indian knowledge system to the global level and to give India the status of a Vishwaguru. And yoga is very much part and parcel of that. Therefore, the Government of India, all the central universities and state universities across the country are celebrating this International Yoga Day. And in IGNOU, we thought that we will celebrate it for a month because we have 56 regional centers across the country. And if all the 56 regional centers will be given the responsibility to organize one yoga seminar or a demonstration of yoga, then it will cover the entire month. And on the concluding day, on 21st of June, we are planning to have a live program from the IGNOU headquarters, where Honorable Vice Chancellor, Pro Vice Chancellors, registrars, and senior professors of the university will participate and do yoga, along with all the others who will be joining through social media and through the DTH connectivity. So I thank the organizers. I thank the regional director of Nagpur, Dr. Sivaswarup, for organizing this, and I am particularly very happy that not only professional yoga teachers are here to demonstrate, but some of the students from the state of Maharashtra, from Nagpur, from Mumbai, from Pune, will also be joining this platform to give a demonstration of yoga, and particularly students of our certificate program in yoga will also be participating in that. It is very, very heartening. I really derive pleasure when I see the students are also participating in our activities. So I wish this program all the success and all the very best to all those who are participating, either as resource persons or as participants. So thank you and best wishes. Thank you, sir, for your valuable insight on yoga. Thank you for your motivating words. Sir, we are very lucky to have you as our Pro Vice Chancellor. I am very sure each one of us present here will take the home a message participating yoga daily. Thank you very much, sir. Now I request Dr. Radhika Wazalwar ma'am to guide us on a technique for stress release. Over to you, ma'am.
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Namaste. First of all, before I start my presentation, I would like to offer my humble pranams to all the dignitaries who are with us here and also the dignitaries who joined online with us for the session. So, the topic which we are going to discuss today is yoga as a stress buster. So, before I start my presentation, I would again thank Dr. Shiva Swarup that he has given me this platform to share my knowledge on the topic. So we have to think that why this topic is very important. First of all, yoga as a stress. The stress name is really very common nowadays. We from in our surrounding we always hear about the stress word. तनाव जिसे हम ताण कहते हैं मराठी में और तनाव हम हिंदी में कहते हैं. अब इसका क्या महत्व है? योग ये किस प्रकार हमारे स्ट्रेस को रिलीज कर सकता है और वो क्यों महत्वपूर्ण है वो हम अभी देखेंगे. बेसिकली एज पर द WHO report, nowadays we are hearing more about the non-communicable diseases. The diseases like cardiovascular diseases, the diseases like cancer, respiratory disorders, and also the diabetes and hypertension. There are anxiety disorder, stress-related disorders like anxiety, depression. These all non-communicable diseases we are seeing oftenly around us. And as per the WHO report, these non-communicable diseases are killing 41 million people each year, which is equivalent to 71% of all the diseases globally. So this is really a very important part to be concerned because each year more than 15 million people die from a non-communicable disease in between the age group of 30 to 69. If we see this age group, definitely we are seeing that this is a very struggling period, right? All of us in the age group of 30 to 69 are working hard to cope up with the lifestyle, or they are into the working style where they have to continuously, there is continuous stimulation in their life, correct? Then 85% of these premature deaths occur in low and middle class income countries, and 77% of all non-communicable diseases deaths are in low and middle income countries. And these four groups of diseases, which I recently mentioned, that cardiovascular diseases, cancer, respiratory diseases, and diabetes, they account for over 80% of all the premature NCD deaths. So even if the age group is not in the very early age group, also we are finding these diseases oftenly in our society. So that is why it is very important to look after the stress variable, the stress factor which is there in our lives. And also we should understand what exactly it is. Stress is not always bad as per the definition of modern science and also as per the definition of yogic science. So to understand the stress factor, what exactly the stress is, let us see the modern medical perspective of the body. If you can see my screen, here is a picture of a human body, and our concept of body as per the modern medical perspective, it is made up of organs, systems, tissues, cells, DNA, RNA, genes, various chemicals, neurotransmitters, neurochemicals. So this is all about the human body as per the modern medical science, right? And now if we see at the physical level, as per the modern science, what is stress? Basically, stress is a response
It is a response to the situation, and this response is always there whenever there is a triggered or whenever there is any kind of situation which is going on around us. So we can tell that situations as a demanding situation, and these demanding situations are also internal and external. Okay, for example, let us understand this stress as a response. How we can understand this? Wherever you are sitting right now, or if we are sitting here, all of us, अगर यहाँ पे अभी एक शेर आ गया, for example, अगर अभी यहाँ पे एक शेर आ गया, so what will happen? That we will perceive that our perception will be there, and from our intuition or from our memory, we will come to know that this is an animal, a tiger, which is dangerous for us, right? This is how our mind perceives the demanding situation. अभी क्या होगा when there is this perception Hello, sir. I'm not getting the voice. Sorry for the interruption. Because of the power up, we will start within 2 minutes.
हे साइडला जे आहे ना ते साइडला ते hope I am audible right now. Am I audible to all of you? Yes, madam. Now it is audible. Am I audible? Yes, madam. You are audible. Yes, ma'am. Am I audible? So sorry for the interrupt because of the power of gone. We have to just shift our network. So we were talking about the flight and fight response which is there. जैसे मैंने एग्जाम्पल हम देने के लिए बताया कि अभी अगर यहाँ पे शेर आ गया तो हमारा एक फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट होता है बिकॉज वी हैव टू ईदर फाइट अगेंस्ट द डिमांडिंग सिचुएशन और वी हैव टू फ्लाइट और वी हैव टू रन अवे फ्रॉम हियर। अभी यहाँ पे शेर आने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ से भागना होगा। अब भागने के लिए क्या होता है कि द नर्वस सिस्टम, हमारा जो हेड ऑफ द ऑल सिस्टम्स है, वो क्या करते हैं कि they send the signals to the hypothalamus, to the other region, the HPA axis. That is, the sympathetic nervous system gets activated, and all the signals goes to the different systems of our body to get activated because we need to run from the situation or we need to fight against the situation. हमें अगर यहाँ से भागना है तो हमें ज्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें भागना है तो हमारे जो भी स्टोर्ड फैट्स है वहां से, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि जो डिमांडिंग सिचुएशन है तो रुक जाइए, हम ग्लूकोज पीते हैं पहले और फिर भागते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमें अगर कुछ भी फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स देना है तो हमारे जो स्टोर्ड फैट्स एंड ग्लूकोज है वो रिलीज होना चाहिए बॉडी में। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं, इट गेट्स एक्टिवेटेड विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए भाई बोलते हैं। समझ लीजिए वो हमारे भाई हैं जो हमें मदद कर रहे हैं डिमांडिंग सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अभी क्या होगा, इस समय में आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद हमारा ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद हमारा जो ब्लड फ्लो है वो नॉन एसेंशियल बॉडी पार्ट्स जो है वहां से डाइवर्ट हो जाता है, हमें पसीना आने लगता है, और उसके बाद मेन थिंग इसमें जो होते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्लो डाउन होता है, हमारा इम्यून सिस्टम लो डाउन होता है। ये क्यों होता है? देयर इज अ रिलीज ऑफ सम chemicals in the body due to the sympathetic activation, that is adrenaline, noradrenaline and cortisol. And when अभी यहाँ से हम सेफ दौड़ के दूसरे जगह पहुंच गए, जब हमें ये महसूस होता है कि हमारा डिमांडिंग सिचुएशन जो है वो अभी हम उसके बाहर है, तो वो डिमांडिंग सिचुएशन की जब बाहर हम होते हैं तो उस समय हमारी फिर बहन, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो डोमिनेंट होके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को काम डाउन करती है। वो कैसे? एसिटिलकोलिन नाम का एक सिक्रीशन होता है, उसके बाद ये तीनों कॉर्टिसोल लेवल, तीनों एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल स्लो डाउन, लोअर डाउन होते हैं। और ये फिजियोलॉजी हमेशा हमारे दैनंदिन जीवन में चलती रहती है। बट अगर हम इस फिजियोलॉजी को देखेंगे तो हमें निसर्ग को थैंकफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फिजियोलॉजी जो हमारे शरीर में हो रही है वो हमें डिमांडिंग सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मदद कर रही है, राइट? तो हमें स्ट्रेस हमेशा बुरा होता है ऐसा कभी ही नहीं सोचना चाहिए। स्ट्रेस हैज टू पार्ट्स, eustress and de-stress as per the modern science. Eustress is a good stress which helps us to cope up with the situation, okay? But अभी यहाँ पे क्या होता है हमारे दैनंदिन जीवन में, अगर हम इस बारे में अवेयर हैं कि हाँ कुछ डिमांडिंग सिचुएशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि
internal demanding situation है जैसे emotions basically, and the most important, if we take the yogic point of view, the most internal demanding situation which every individual is facing nowadays is emotional instability. And due to this emotional instability, there is continuously physiology of stress is happening in the body, and we are not at all aware of that. Are we really thinking that yes, this type of stimulation occurs in the body, and are we really working on that to calm down it, to relax it then and there? No. कैसे? हमारे साथ कुछ सुबह कुछ हादसा हो गया, हम लोग शाम तक उस चीज को सोचते नहीं रहते हैं, शाम तक जाइए हम दूसरे दिन भी उसी सिचुएशन में रहते हैं बहुत बार. तो ये क्या हो रहा है? इट इज ऑल internal demanding situations which is always we are carrying along with us, and that is why this physiology of stress is continuously happening, and there is long standing speed of all this physiology, and it is giving birth to many psychosomatic ailments. Psychosomatic is the diseases which are connected with our mind and percolating in the body. Okay, so that is why here the yoga plays a very important role, because yoga is a technique, is a science, is an art, is a skillful art which helps us to bring the balance of both the systems of brain, that is the sympathetic and parasympathetic nervous system. So we are controlling, we are not even controlling, we are mastering over the mind with the help of yogic techniques, which is helping us to keep the balance within us. Okay, this is how the physiology of stress happens. So यहाँ से आपको क्या एक नोट या मैसेज लेना है? जैसे ही ट्रिगर होता है कुछ भी थॉट या कुछ भी डिमांडिंग सिचुएशन है, तो तुरंत इंटरनली हमें अपने आप से बात करनी, ओके नाउ माय भाई, the sympathetic activity is stimulated, but I know if it is still keep on stimulating, then what will happen in my body? So I don't have to allow my sympathetic activity to be always with me. I have to allow my behan, the parasympathetic activity also, to calm down myself. Then and there, this is how we have to understand the physiology of stress. Then only we are able to practice the yoga. Yoga practices are not only at the physical level. Only practicing asana, pranayama is not everything. Basically, yoga is a way of life. So every moment we have to live the yogic way of life. And that then only we are able to balance this main physiology of the stress which is happening in the body. Okay. So this is, now let us understand the physiology of stress as per the yogic science or the yogic point of view. Taittiriya Upanishad tells that an individual has 5 layers of consciousness, and this defines an individual from gross to subtle, basically. So what exactly our existence is there in 5 sheets. The first gross level sheet is called the Annamaya, which needs Anna, that's food. That is called physical level. Then the next sheet is Pranamaya Kosha, that's our life force, that's our vital energy force, Prana, through which we are surviving. We know that if there is Pran, we are alive, right? The next sheet is the Manomaya Kosha, that's our mental sheet. And the next sheet is wisdom sheet, that's Vijnanamaya Kosha, our intellect. The discrimination power which we have. What is wrong? What is good for me? See, nowadays, many young people, they are getting into various addictions, which are giving birth to very non-communicable diseases. Because in that cases, the Vijnanamaya Kosh, their wisdom, that this is not good for me, that is not activated. They are not aware of their wisdom sheet. And what is the role of yoga here? This the yogic practices or the thinking of the deeper understanding of yoga helps us to understand the power of our wisdom sheet. And the
The subtlest sheath is our Anandamay Kosha, that's the bliss state of the body, bliss state of the individual existence, that is our real nature. But nowadays, what is happening? We are not at all aware of this. We are more at our gross level, only at the physical level, and we are just thinking about our gross level. And the Manomaya sheath, as per the yogic point of view, the Manomaya sheath, the mental sheath, is all about the emotions, all about the stress, all about the Adi. Adi is called the seed of the diseases, which the seed of the diseases where it gets generated into the Manomaya Kosha due to the continuous speed of mind. And here we can see how at the Manomaya Kosha there is a continuous speed of mind. The restless mind, excess speed, no control over the thoughts. And this particular excess speed, the restless mind, and when there is no control, it is Adi, the seed of all the diseases. So what is the role of yoga? The role of yoga is first to treat your Manomaya Kosha, not directly your physical level. But yes, through the physical level, we can go to the Pranamaya Kosh, we can go towards the Manomaya Kosh to bring the mastery over the mind. Even the control and mastery, these two aspects are very different. Controlling the mind is again the suppressing of all the emotions. But mastering the mind is what? Mastering the mind is basically to divert the mind and accept the condition, accept the demanding situation with a very slow speed of mind. So we are slowing down the speed of mind with the yogic practices, and that is how we are mastering our emotions through the different techniques which we use in our yogic practices. Okay. So what is the definition of stress as per yoga? It's nothing but a speed, the continuous speed which is going on at the back of our mind. And what is the main solution to this is yoga. The main solution is given in even it is mentioned in Vasishtha. The mana prashamana upayaha yoga ityabhidiyate. Yoga is the skill to calm down the mind. And when we are able to master our mind, we are definitely able to manage our stress-related disorders at physical level. So, how it happens? The stress management through yoga, how it happens? It happens when the individual is able or empower the perceptions. So, yoga enables an individual to modify their perceptions. We can modify our perception कि हम demanding situation को respond करना है या react करना है. That is very important. Please make sure that try to understand the two main difference in the reaction and the response. So if we are not in a state of balanced state of mind, we will react to the situation, and that reactions are definitely dangerous and harmful for us. But the response is to the demanding situation is with a very we can modify our perception and then respond to the situation, not the immediate reaction. And the intensity of the reactions, the responses also we are able to control by modifying our perceptions to the demanding situations. Also, yoga enables or yoga helps to optimize our responses, and it efficiently releases the pent-up stresses. Due to the too much of speed of mind at Manomaya Kosha level, our Pranamaya Kosha, the pranic level, the prana which flows in the body at the subtler level, they get disturbed in the body. And when they get disturbed, they find some other place to relocate.
And when they relocate in some other parts of the body, they create lot of tension at physical level. For example, we get a pain. Usually, if we see those who are working and sitting in one place, we find more stress get pent up or get just accumulated in the neck region, upper part of the back, and also at the in the head region. So basically, the most important part to de-stress during the working hour is the neck region. Okay, that's the techniques we will see further. So due to the imbalances in the pranamaya kosha, our different the stress get accumulated at the physical level. So what yoga gives us? Yoga gives us various practices at physical level, like different asanas, breathing techniques, shatkriya, sattvic ahar. As we are celebrating the International Yoga Day month, we even we the participants who join, we are aware of all these uh, terminologies. The asana we know, breathing techniques we know, pranayam, shatakriya, sattvic ahar. This is all at physical level. But today we are going to more focus because today's topic is yoga as a stress buster. So mainly we have to concentrate on our manomaya kosha, that's at our mental sheet. So to bring the control, to bring the mastery over the mind, we need to give deep rest to the mind body complex. How you can see in the screen the tortoise. So we have to basically live the life like a tortoise, to breathe like a tortoise, very slow breathing. So the principle of yoga is basically to de-stress is based on three principles, that you need to stretch, you need to breathe long, breathe deeply, and also to meditate or to just calm down the speed of mind. So calming down the mind, then balancing the breath are the most important key points to bring the stress levels lower. So there are different techniques which are mentioned in our scriptures, and even today with the recent research evidences, we have many good techniques like mindfulness meditation, cyclic meditation, the different meditation techniques which are giving deep rest to mind body complex. Because there are so many research evidences we have that these type of techniques are stimulating or activating the prefrontal cortex region. It is attenuating the limbic cortex, the emotional cortex, which is there in the head region in the brain. So this is how we have enough research evidences behind all the meditation technique which are mentioned in our ancient traditional system yoga. So how we can release the stress? Basically, this is a message to the people who are working and whole day from morning till evening they are sitting on the chair. So it is not compulsory. It is not that you should definitely. It is important to take out 1 hour for you for your own practice. But if you are not also getting enough time to practice for yourself while working, please make sure that you try to be aware of what work you're doing, how you are reacting to the situations during the work time, and also try to stretch yourself sitting on the chair. Try to become aware of your breath always. Try to do the deep conscious breathing, which is helping to decrease the sympathetic activity, and also try to relax, because our theta and alpha, the waves which are there in the brain, it gets activated during the meditation state. So now let us see the techniques how we can de-stress ourselves during the working period. Okay, I want to insist, or I want to give more importance to the sectional breathing, that's the breathing pattern. It is very important for us to understand how we breathe, because during my consultation practice, like the from the last 15 years, when I am checking or when I am taking history of the patients, I always see that
there is a imbalances in the breath. There is the people are have forgotten the importance of their breath, the prana. They don't know how to breathe properly. But if our breath is a bridge in between the mind and the body, if we are trying to bring the balance, the equilibrium in between mind, body, and breath, it is very important to first work on our breath. Please, this is a humble request to all of you that you first check your breathing pattern. Are you breathing at the fullest, or you are just, हमें पता है हम सुबह उठ रहे हैं, शाम तक हम बस काम कर रहे हैं, हमारे सांसें चल रही है और हम बस जिए जा रहे हैं. ये महत्वपूर्ण है या हम क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, उसको हम सोचने के लिए, स्ट्रेस हम पे जो इफेक्ट डाल रहा है उससे बचने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप किस प्रकार ब्रीथ कर रहे हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न? If you now I think some of you are sitting with me, so please sit straight. I'll just tell you how to breathe properly. So sit straight and check your own breathing pattern. आप आपका खुद का breathing pattern check करिए. आप पेट पे हाथ रखिए, राइट हाथ आपका पेट पे रखिए, आंखें बंद करिए और सिर्फ सिंपल आप डीप ब्रीदिंग करिए. दीर्घ श्वास भरिए धीरे धीरे और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए. अभी आपको सिर्फ चेक करना है कि आप बराबर कर रहे हैं कि नहीं. आप सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं धीरे धीरे. अभी आपने हाथ क्यों रखा है पेट पे? हाथ पेट पे रख के आपको ये देखना है कि आपका पेट सांस लेते हुए बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है. Okay, so I think those who are from the yoga background, those who are joined online also, they must be knowing this. The pattern of breathing should be, when we inhale, our chest and stomach should expand. Okay, and when we exhale, it should relax. तो ये होगा करेक्ट ब्रीदिंग पैटर्न. अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आप घर में जाके ये चेक करेंगे कि आप बराबर सांस ले रहे हैं कि नहीं. मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक यहाँ से ही हम देखेंगे कि 5 में से 2 लोग का ऐसे होगा कि सांस लेते हुए पेट अंदर जा रहा है, which is a wrong breathing pattern. That means you don't have control or the still see everybody cannot reach that state of the balanced state of mind, because we know that we are human beings. But yoga is a skill, yoga is an art, yoga is a science which helping us to reach that state of mind where we can be balanced. So this is a very simple technique which we can do. First most important technique is to improve your breathing pattern. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही है या वो गलत है वो चेक करेंगे. सही क्या है, सांस लेते हुए पेट बाहर आना चाहिए. गलत क्या होगा, जब आप सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा तो वो गलत होगा. ओके, दिस इज क्लियर. तो इस प्रकार आपको सबसे पहले ब्रीदिंग पैटर्न इंप्रूव करना है. अब कैसे करना है, आप 5 बार पहले सिर्फ पेट का ब्रीदिंग करेंगे, जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं. सांस लेते हुए सिर्फ पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 पेट अंदर जाएगा. ठीक है, सांस लेते हुए पेट बाहर आएगा, गुब्बारे में हवा भरते उस प्रकार, और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा. इसी प्रकार फिर चेस्ट ब्रीदिंग होगा, थोरैसिक. तो आप सांस लेते हुए कॉन्शियसली आपके चेस्ट को फुलाना है और सांस छोड़ते हुए चेस्ट अपने आप धीरे धीरे नीचे जाएगा. द नेक्स्ट इज द क्लेविकुलर ब्रीदिंग. यहाँ पे जो हमारा कॉलर आता है, यहाँ पे हम कॉलर बोन बोलते हैं इसे. यहाँ पे आपको ब्रेथ को फील करना है. सांस लेते हुए थोड़े कंधे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको फील होता है एयर. ठीक है, इस प्रकार आप 5 बार स्टमक, चेस्ट और थ्रोट, ये तीनों का ब्रीदिंग करेंगे. ओके, अब ये तीनों का ब्रीदिंग होने के बाद इन तीनों को कंबाइन करेंगे. मतलब क्या, सांस लेते हुए पेट, छाती, गले तक पूरी हवा भरती है.
इतना डीप ब्रीदिंग हम कब करते हैं? ध्यान रखिए, आप बताइए कैसे होता है? जब थक गए है ना, ऐसे होता है। दैट मीन्स योर बॉडी रिक्वायर्स दैट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये हमें कॉन्शियसली ये करते रहना है। तो हमारा बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो एनर्जी फ्लो है टुवर्ड्स द माइंड, टुवर्ड्स द ब्रेन, it will be energized. Our mind get energized with this particular process. Our oxygen levels get increases. तो आपका शाम तक स्टेमिना कैसे रहेगा? इम्प्रूव्ड रहेगा, अच्छा रहेगा। घर में जाके चिड़चिड़ नहीं करेंगे। जनरली लेडीज का होता है कि घर में जाके चिड़चिड़ होता है ना? बट yes, the male and the female gender factor is not there. Everybody is living with some kind of stress with it, right? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका ब्रीदिंग इंप्रूव करें। आप पूरा आनंद से खुल के लंबी सांस भरना है और धीरे से सांस को छोड़ना है। अब ये सिंपल टेक्निक है, ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं। करेक्ट? आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग रखिए, राइट? इज इट अ सिंपल प्रैक्टिस? And please do it. I am telling you, today is 8 June. I will meet you again after 1 month and you tell me the results. मैं पूरा कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, सिर्फ डीप ब्रीदिंग से ही मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। Okay? So this is the first technique. Got it? Now, the second technique is very important. That's Brahma Mudra. Brahma Mudra is, if you can see my screen here, it just the movement, the neck movements. Why the neck movements and with the Brahma Mudra, why it is important? Because neck जो है हमारा जंक्शन है। किसके बीच का जंक्शन है? हेड और बॉडी। Whatever the sensory information goes towards the brain, it should pass through the neck, right? And whatever the motor signals should go from the brain to the body, it passes through the brain. And even through the yogic point of view, our most of the stress get accumulated in this part, right? The most important veins, the carotid vein, other veins, जो बहुत important veins है, वो पास होते हैं कहाँ से? नेक से। तो हमें सबसे ज्यादा जो वर्किंग है, उनको सबसे ज्यादा टेक केयर किसका करना है? हमारे ये पार्ट का, नेक, shoulders and the upper back. Even from the yogic point of view, most of the time the stress get accumulated in the spine, the energy, because the spine, there is one more physiology behind this, that's the chakra physiology, which I don't have to discuss right here because it's a very deep philosophy and physiology. But yes, the human spine जो है उसका हमें बहुत ज्यादा महत्व समझना चाहिए, उसका हमें इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और एब्डोमिनल एरिया सबसे ज्यादा होता है कि हमारे पेट के हिस्से में भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है। मणिपुर चक्र जहाँ है, नाभि स्थान, सो नाभि स्थान, अभी कंठ स्थान पे विशुद्धि चक्र भी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है नेक मूवमेंट्स का? ये सारा जो है, जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है, वो थ्रू नेक से हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बैठे बैठे इस पार्ट को कैसे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है उसके लिए? आपको सबसे पहले नेक मूवमेंट जो है वो ब्रीदिंग के साथ करना है। अब ब्रीदिंग का फर्स्ट टेक्निक समझने के बाद ब्रीदिंग आपसे दूर नहीं होगा, दिन भर नेक मूवमेंट के साथ भी ब्रीदिंग रहेगा। तो क्या करना है आपको? जब आप सांस, आपको पहले सांस लेते हुए गर्दन को राइट साइड पूरा टर्न करना है और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन आपका सेंटर में आए। दिस इज 1. Now turn to your left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, पूरा inhale करते हुए and then exhale, slowly bring it to center. ये हो गया right and left. Simple. अभी आपको पीछे ले जाना है. So inhale, slowly bend backward. Exhale, center. Okay, back. अभी होगा front. Inhale, slowly down, 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 down. And exhale, slowly bring it to center. Okay, ये 4 movement. ब्रह्म मुद्रा 4, ब्रह्म जो हमारे हैं उसमें 4 फेस है, इसलिए 4 डायरेक्शंस, राइट, लेफ्ट, बैक एंड फ्रंट।
अब इसके साथ ही हमें नाद योग को जोड़ना है. That is very important because the naad, when we chant something, it creates the resonating effect in the body. So we vibrate. We should create the vibrations. The vibrations, it helps to release the tension. Okay, because we match our resonating frequency with the universe by chanting a, u, e and m. तो इसके साथ आपको अकार, उकार, ईकार और मकार का उच्चारण करना है. तो वो कैसे करना है? अभी आपको इनहेल करके गर्दन आपका राइट साइड टर्न होगा एंड देन simple. Then inhale, turn to left side. Turn to left side, inhale and then the third, inhale back. Center. Then inhale down and chant makar. Simple. No need to feel shy to chant in the office. You can please motivate others to do this because everybody is suffering with the same problem around you. So please, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, breathing, उसके बाद ये neck movements, ब्रह्म मुद्रा, right, left, back, front with breathing and with akar, ukar, ikar and makar. Okay, simple. Now, the next technique is instant relaxation technique. Instant is 1 minute relaxation. आजकल का जमाना ही ऐसा है. हमें रिलीफ चाहिए instant. सर दुख रहा है, सारिडॉन, पैरासिटामोल, राइट, ताकि हमारा तुरंत सर दर्द दूर हो जाए. बट उसके साइड इफेक्ट्स हमें पता है. I am see every pathy have their own importance. I am not at all criticizing the modern medicine, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन का भी महत्व कहीं जगह है. लेकिन अगर हमारे पुरातन शास्त्र में कुछ ऐसी टेक्निक्स, हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसी टेक्निक्स दी है जो हम छोटे छोटे दैनंदिन जीवन के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पेन है, माइग्रेन का पेन है, तो अगर इसे हम रिलीव कर सकते हैं तो क्यों हम उसके तरफ ना बढ़े, राइट. इसीलिए जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन हमने जो डेवलप किया है इस व्यासा ने, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बैंगलोर, वो है 1 मिनट का. अब इसमें क्या करना है आपको? आपके टोस से लेके आपके फेशियल मसल्स तक एक एक अवयव को टाइट 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 करते जाना और फिर एकदम से ढीला छोड़ देना है. ओके, तो इसमें क्या होगा? जो भी टाइटनेस हम जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली इट इंप्रूव्स द ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी. जो भी पैक्ड है, स्टोर्ड स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है. ओके, तो इसे आपको कैसे करना है? अब आप चेयर पे ही बैठे हैं, अब चेयर पे थोड़ा सा आगे आ जाइए, पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों को पूरा सीधा कर लीजिए, हाथों को बाजू में चेयर के जो हाथ है उस पे रख दीजिए. ओके, अभी मैं आपके एक एक अवयव का नाम लेते जाऊंगी, उस अवयव को तरफ ध्यान देना है, टाइट करना है, ध्यान देना है, टाइट करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आपके टोस पे ध्यान दीजिए. आपके टोस को टाइट करिए, एंकल्स को आगे झुकाइए, एंकल्स टाइट करिए, काफ मसल्स टाइट, पुल अप योर नी कैप्स, टाइटन योर थाइज, स्क्वीज योर बटक्स. आपके बटक्स को भी टाइट करिए, हाथों की टाइट मुट्ठी बांधिए, रिस्ट को टाइट करिए, एल्बो से हाथों को फोल्ड करिए, दंड को टाइट करिए, कंधों को, गर्दन को टाइट, बैक को टाइट, आंखों को टाइट करिए, फेशियल मसल्स को टाइट करिए. पूर्ण शरीर अभी टाइट है. टाइटन 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 एंड स्लोली रिलीज द टेंशन.
एकदम धीरे से टेंशन को रिलीज करना है। हाथों की मुट्ठी धीरे से खोलना है, चेहरे पे स्माइल, आंखें रिलैक्स, संपूर्ण चेहरा रिलैक्स, पूर्णतः शरीर को शिथिल छोड़ना है। दिस इज सिंपल 1 मिनट इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ये आप बैठ के कर सकते हैं चेयर पे। अब आप अलार्म लगा के रखिए आपके मोबाइल में, क्योंकि आज का सेशन होने के बाद कल कितने लोग करेंगे मुझे पता नहीं। So please keep it a reminder in your mobile phone that from tomorrow onwards, from today onwards, we have to start these practices to de-stress ourselves then and there. ठीक है, नहीं तो मुझे आपके फोन नंबर दे लीजिए, मैं आपको फोन करके याद दिलाऊंगी। क्योंकि योगा एज अ स्ट्रेस बस्टर जो हम आज ले रहे हैं टॉपिक, उसको हमें फुलफिल करना है। ये सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करना है इसलिए नहीं, ये जन जन तक हमें पहुंचाना है। वही हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स में इतना भंडार है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि हमें भारत को रोग मुक्त भारत बनाना है। दैट्स अवर अभियान। रोग मुक्त भारत अभियान अभी चल रहा है कि हर एक व्यक्ति इस भारत का रोग मुक्त हो। तो इसीलिए आप स्प्रेड करिए, खुद अनुभव लीजिए और स्प्रेड करिए। ओके, यस। अभी यहाँ पे these are few asanas which really helps to de-stress yourself. बटरफ्लाई है, सिंपल है, बद्धकोणासन, मार्जरी आसन है, त्रिकोणासन है। घर में रात को आप जाने के बाद खाना 2 घंटा पहले आपको खाना है, सोने के पहले। ठीक है, जब आप सोने जाते हैं तो आप पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, पैरों को स्ट्रेच, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें और वो स्ट्रेच होने के बाद रिलीज करके पवन मुक्तासन करें। पवन मुक्तासन इज व्हाट? आपका राइट घुटने को पेट पे पकड़ना है और ठुड्डी को घुटने से लगाना है और यहाँ पे डीप ब्रीदिंग 5 बार करना है। फिर आपने लेफ्ट पैर को लेना है, लेफ्ट पैर को पेट पे पकड़ के आपको ब्रीदिंग करना है और फिर दोनों पैरों को एक साथ। तो ये बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत महत्व, क्योंकि जो हमने स्ट्रेस फिजियोलॉजी फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जो स्ट्रेस फिजियोलॉजी हमारे साथ दिन भर हो रहा है ना, जो स्टिमुलेशन हो रहा है, हमारा भाई का जो एक्टिविटी है, उसकी वजह से सबसे पहले इम्पैक्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, क्योंकि वहां का ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है उनका डाइजेशन ही बिगड़ जाता है सबसे पहले। तो आपको क्या करना है, रोज रात को ये प्रैक्टिस करना है सोने के पहले, लेकिन कब? जब आपका खाना 2 घंटे पहले ही हुआ हो तब, अदरवाइज आपको नहीं करना है, या फिर आप सुबह उठ के करिए। सो दीज आर फ्यू आसनास विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पोर्टेंट आसन है अर्धकटी चक्रासन। अब ये आप ऑफिस में भी खड़े हो जाइए, खड़े होके आपको सिर्फ हाथ ऊपर करके सांस लेके राइट साइड को पूरा स्ट्रेच करके आपके लेफ्ट साइड ऐसे झुकना है। अब ऐसे झुक के आप अगेन डीप ब्रीदिंग फॉर 5 राउंड्स, कम बैक एंड देन डू इट फॉर द लेफ्ट साइड। ये एक साइक्लिक मेडिटेशन में हम इम्पोर्टेंट आसन है, बिकॉज इट बैलेंसेस बोथ द सिस्टम्स ऑफ योर ब्रेन, द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ आसन मैंने यहाँ पे दिए हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं या ऑफिस में भी। So these are the few important technique which we have seen here. I will revise it immediately. Improvement of your breathing pattern. सबसे पहले आपका श्वास बराबर है, ब्रीदिंग पैटर्न वो चेक करिए। उसके लिए स्टमक, चेस्ट और थ्रोट ब्रीदिंग करिए। सेकेंड, कॉम्बिनेशन तीनों का, डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग। सेकेंड, ब्रह्म मुद्रा, नेक मूवमेंट्स विद ब्रीदिंग एंड विद अ, उ, ई एंड म चैंटिंग। ये आप यहीं पे चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। थर्ड इज इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। टाइटन टाइटन टाइटन, बॉडी को टाइट करना है और रिलीज करना है पूरी तरह से। ऐसे आप हर 2 घंटे में थोड़ा सा याद करके अपने लिए समय देके कि अरे मेरा आंखें मेरे लिए काम कर रही है, मेरे हाथ मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे सिस्टम्स मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो आई हैव टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू माय सिस्टम्स। ये याद करिए, हमारे सिस्टम्स को
शरीर को ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर हम ग्रांटेड लेते हैं तो हम बहुत से रोगों के साथ फिर जीते हैं, बहुत सी गोलियां खाते हैं, ऐसा मत करिए। ओके, सो प्लीज, it's a very important thing that you have to live your life as a yogic way of life. जरूरी नहीं कि आपको रोज 1 घंटा क्लास में जाना, नहीं जम रहा है कोई बात नहीं, बट ये छोटी छोटी चीजों का अवेयरनेस रखिए. So yoga is basically a conscious living. So be conscious about what you are doing, how you are reacting to these situations. Is it really necessary to react to the situations at that much intensity? सच में इतने गुस्से की जरूरत थी क्या, है क्या? ये सारा हम, ठीक है, बोलना आसान है, करना कठिन है, ये भी मैं जानती हूँ, but nothing is impossible. You can do it because every individual has their inner potential. It has been rightly said by Swami Vivekananda. वो ही potential को हमारे अभी बाहर के स्तर पे हमें लाना है, और through yoga we can definitely reach that state of mind and we can definitely combat, और हम सभी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को. और जिनको है ऑलरेडी स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो इंसुलिन ले रहे हैं, गोली खा रहे हैं, दे कैन मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है, मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और योगा ऐसा टूल है जो मैनेज भी करता है, प्रिवेंट भी करता है. अभी जो एडवांस रिसर्च हो रहे हैं उसमें और भी चीजें हो रही है कि हम कुछ चीजें क्योर भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं कि हम मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के सिर्फ उसी में लग जाए. नो, वी हैव टू गो, बिकॉज योगा इज बेसिकली एडजुवेंट थेरेपी. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी व्हिच वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन आवर लाइफ. ओके, सो with these words I thank all of you to hear me patiently, and I am really very grateful and thankful to the IGNOU University, the dignitaries, to give me this platform to share my knowledge. I hope this knowledge you will definitely perceive, percolate, and practice in your life and spread to many people. In whomsoever you meet, please spread this message to everybody. That will be the most important thing in the today's the मतलब वो सार्थक हो जाएगा आज का वेबिनार, ऐसे मुझे लग रहा है. And I really pay my gratitude towards my guru, towards all the teachers who taught me, and all the elders who are supporting me to do this work. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you, madam, for sharing your deep knowledge about the stress relaxation techniques, breathing techniques, Brahma Mudra, instant relaxation techniques. Thank you very much, madam. Again. Now I request Dr. Alka Bhivankar, madam, to guide us on yoga. Over to you, madam. Yes, thank you, sir. Have you given me the sharing slide option? Share option. Sir, please enable the sharing option for me. 1 minute, madam. 1 minute. Yeah. At the share screen first. Click. No. तो डिसेबल पार्टिसिपेंट्स को तो डिसेबल रिप्रेजेंट हम करें. It's showing host disabled. दिया है मैडम, चेक कर लीजिए. हाँ आता थे. हाँ. Yes. Can you see the slide? Can you see the slide, sir? Yes, ma'am. Okay. So at the outset, let me thank IGNOU, Nagpur Region Center, and Dr. Shiv Swaroop for giving me this opportunity to speak on yoga as a stress buster. The earlier speaker, Dr. Radhika, has made my job very easy because she has given a very
a vivid description of stress and what are the techniques to combat stress. So to start with, I will greet all the friends and the viewers here. Good afternoon, all of you. You are all aware that we are celebrating the 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. So when we look back and take a quick overview of the chronology of events in the post-independent era, what we see that India has undergone tremendous development right from industrialization followed by rapid urbanization, then the technological advancements, modern society that we are living, and the highly sophisticated lifestyle. So all this has resulted in an incredible pace of life. What she said, that stress is equal to speed. So that is the power or the space of life that we are experiencing. But unfortunately, it has robbed us the peace of mind. So that is the very ill effect of stress. We are witnessing people are having a lot of problems, ill effects of these developments, suffering from diseases, pollution, migration, and unemployment, social crimes. Till recent, we were also suffering from the global pandemic, and that was a very stressful situation that all of us have undergone. So all problems, all hardships boil down to one word, that is stress, which is ruling the entire world, although we call it a global village, but it is fully governed by the ruler, the tyrant, who is stress. So on this occasion of the ensuing International Yoga Day, the topic chosen is absolutely apt and appropriate, that yoga as a stress buster. And so let us see now that how yoga is a great boon to mankind, not only as a stress buster, but to help the entire humanity to cope up with the challenges of the modern lifestyle and stress. So she has given a lot of description and definitions, but I will just quickly run through those slides so that I do not repeat unnecessarily. So what is the definition of stress? S is equal to P greater than R, where S stands for stress, P stands for pressure, which she was saying the demands, because of the environment and situations. And R are my resources. What are my resources? What is the time I have at hand? What is the finances, money, the people? All these human resources, financial resources are always less than the demands. And that is why the stress is this reaction to these excessive pressures. That is why we cannot cope up. We are unable to cope up with these continuous demands. So in short, we can say that stress is a gap between demands and resources, or gap between the achievements and expectations, because expectations are always manifold. So they say that Dr. Hans Selye has defined stress is the rate of all wear and tear of our minds and bodies, which are experiencing as we are desperately attempting to cope with this continually changing environment and the demands of the surroundings. So stress has become an integral part of our modern life. And it is like we have almost become slaves to this stress, a victim of this great monster. And this monster is taking toll of our physical and mental health. Now, when she told about stress, she said it is more of speed. And what we saw is a gap between demands and the resources. So what are these? So the stress is not always bad. Sometimes it can be a good stress, which is called as eustress. So two types of stress are there, eustress and distress. So what is eustress? It is synonymous with a healthy essential stress, which is necessary for excitation for life to bring out the best out of us. So they say, for example, goal setting, sports, any passion we have, hobby, uninhibited joy that we gain. Even during exams, some people excel. And then there are many good occasions, marriage, for which we really strive, plan everything. Nowadays,
it goes on for a week. So everything is planned well. But sometimes this high prolonged eustress can also become dangerous due to the constant frenzied excitation of the body and mind. Distress, we can say, is synonymous with morbidness, unhealthy self-inflicted stress, which is causing a lot of physical, mental, and emotional pain. And if you keep it untreated, because she said fight and flight syndrome, yes, that is true, but it is not always possible for us to fight or flight. If we are working in an office and the boss is of an angry temperament, every day and day in and day out, we have to face him without saying anything. So that stress accumulates, and such untreated stress is the cause of various chronic illnesses, diseases, which he rightly mentioned, are the stress-related disorders we see in today's day, or the non-communicable diseases like diabetes, asthma, high BP. So all these are nothing but an outcome. And this stress, where does it occur? How will we know? What are the symptoms? We will see. But this stress can occur at two levels, at physical level and at the psychological level. So physical level, it will happen if we are, unfortunately meet with an accident or some burns or some surgeries if we undergo an infection like this COVID-19 which we had. All this will make demand on our entire physiology. And the psychological stress can be a reaction to such physical stress, or it can occur independently in the form of fear, anxiety, stress, jealousy, all those shadripus that we can think of. Now, what are the stressors? What is causing stress? That also we have to understand, because mostly we are in stressful situations, unable to understand and unable to handle that stress. So we are seeing what are the causes of stress. They are again at two levels: work-related stress and lifestyle-related stress. So work-related stress is mostly these strict deadlines, heavy workloads. So what happens is there is a lot of overburden in offices, especially those who work anywhere in universities. We are overburdened with commitments, responsibilities. So we are unable to cope with this work-related stress. Then job insecurity is there, because all the time we are thinking negative. Oh, if I lose this job, if I'm fired, if I am transferred, what will happen? Then competition with the colleagues to excel, to supersede others, that is general tendency. So there is no need to do that. If you are good enough, it is seen, but still this kind of stress is unnecessary. And then the pressure for high performance, because we have to meet the targets, attain objectives, the deadlines, and toxic work environment. So there is a lot of negativity around because of this demanding job needs. So then these are all work-related stress, which most of us have experienced at some time or the other. Then lifestyle-related disorders are imbalance between family and work. Because we work like workaholics, we tend to neglect our familial obligations, because we are tied up in the office work so much that we get so tired that we have no time for anything. And with this load of stress, we just switch on a TV and forget about everybody around. The personal relationship issues could be any conflicts with your colleagues or at home, some bad marriage stress, or with the neighbors fight, something or the other crops up because of our lifestyle related stress. The financial issues are because there are unending monetary expectations. Our desires are ever increasing, and to cope up with those desires, we are continuously running behind various job opportunities to earn money. The time mismanagement is the sign of improper planning. And lastly, the medical and health issues we heard from her are all stress-related disorders, or what she rightly said, the non-communicable diseases. As we saw, the physical stress, the psychological also stress is there. There is a lot of irritability, anxiety, stress, tension. Nowadays in US and all, we see there are a lot of cases of depression, insomnia. It's very difficult for people. Unless they pop pills, they are unable to sleep. And that is why that, tendency, lack of desire to live is suicidal tendency is there. So all these unpredictable emotional behaviors are there, which are the side effects. And these are seen
because we are not able to understand. We will say, oh, I'm fine. I do yoga, I go for a walk, I have proper. But there is lot of stress which is there, which, as she said, accumulates at your neck region, in your joint, shoulder. So how will you know what are the symptoms of stress? They are occurring at 4 levels: the physical, behavioral, cognitive, and emotional level. The symptoms are seen. Physical are shortness of breath, the tension, as I told you, at the shoulder level, at muscles, muscle tension, headaches. It may be a nominal headache, but then it will end up in some big problem later if it is not attended to. Then the heartburn, upset of stomach. So eating pattern, substance which is we are using, then because eating patterns mostly we tend to indulge because of depression and obesity. These two things are always there along with stress. Or we are, because nervousness, we are continuously biting our nail, wondering what to do next. And any work we are trying to delay, dally, and just laze around. Then cognitive is poor concentration. We are unable to concentrate. There is a memory lapse, forgetfulness, confusion, and negativity. Lot of negativity is entering our mind. We are unable to take decisions, and all the time worrying about the future, worrying about the past. So all that anxiety, mental agitation, everything is in the form of stress at the mental level. Lastly, the emotional disturbances that we are experiencing are nervousness, anxiety, irritability, impatience, and sensitivity. So I have given a overall indication that how to understand what are the parameters which will make us understand. Now, she has spoken already about the hypothalamus, pituitary gland, and organ, which is the manifested part of the disease. Because the hypothalamus is the central organ, and it is giving all central control. It is giving instructions to the pituitary gland, and it is secreting hormones. Now, if they are excess, then they are going to attack the organs, the target organs, and that is how the disease is passing from the mental level to the physical. So to combat that, we have to strengthen this other axis of spirituality, emotion, and mental status. So SEM axis and HPO axis. We will see a little bit of this because, as she said, there are external environment, internal environment of stress. So how we can cope up with yoga and make this SEM stronger to align with that HPO axis, so that when we see the slide, it will be exactly opposite, so that there is homeostasis and harmony. So because of this stress, the sympathetic system we saw is getting activated, and as a stress response, the endocrine system, nervous system starts functioning. So there is that fight and flight syndrome is triggered, and lot of hormones are like adrenaline, etc. are released. So we should know how to practice yoga so that all these stress releasing hormones are taken care of, and we are able to establish good health. So in that physiological effects, as I mentioned, the headache, like migraines, frequent cold, the more important are here: asthma, diabetes, heart disease. Because initially there will be shooting of BP, but then finally it will end up in some heart ailment. So before that serious effect happens, we have to combat stress at the mental level, and that is why we have to understand there are so many effects of stress, and how the Panchakosha theory, which she explained very beautifully. So how that stress begins at the Manomaya Kosha and then slowly goes to the Annamaya Kosha through the Pranamaya Kosha. So we will see in the next slide how we have to give the treatment at 5 different kosha level, so that stress, when we talk as per yoga, is not only speed, stress is imbalance. That imbalance we have to take care of. So I will not explain this slide in more details because it is already covered by the earlier speaker. But just to add to it, I would say that because she said Adi Vyadhi, that is the concept of Yoga Vasishta. But what we have to see, how this stress gets translated at the Annamaya Kosha level. So when we are talking about Manomaya Kosha, there is a lot of emotional imbalance because of strong likes and dislikes. I love this, I hate this. We are not equanimous.
So we will see why role of yoga is important. Because of this likes and dislikes, there is emotional imbalance. At Pranamaya Kosha, there is haphazard breathing, erratic breathing pattern. Why? Because this emotional imbalance is getting transferred into the Pranamaya Kosha and brings imbalance in the pranic level. Then further it percolates into the Annamaya Kosha, and then it brings disturbance in our digestive system, respiratory system, and everything. So there is indigestion, peptic ulcers, all sorts of ailment diseases which start manifesting at the physical level. So, and because of the disturbance at mental level, even the Vijnanamaya level is getting shrouded. Your intellect is getting covered, and that is why you are fully stressed. So slowly and steadily, the ignorance level, when it reduces, when the avidya reduces, the Anandamaya Kosha or the blissful body can be experienced when we are stress-free. So now what is the role of yoga? So when we have seen that yoga is helping us out, what is the role of yoga? We all know yoga is an art and science of living. Just now she said that is the art of living 24/7. We have to be not that half an hour or 1 hour of practice. It should percolate during the day in our own life and all the aspects around us and the people around us. So for Annamaya Kosha, and then as I told you, to bring the balance, yoga also is equanimity. Bhagavad Gita says samatvam yoga uchyate. Yoga karmasu kausalam. So every activity has to become a skilled activity. There has to be a balance between the dualities. So how all these things we are going to bring about in our life? Then Yujir Yoga, our Patanjali Muni says, Yuja Samadhav. So yoga is union, yoga is concentration. So union of the body, mind, and your speech. So if all the your apparatus, body, mind complex is in harmony, then the homeostasis is established. Then the concentration, if you are concentrated, then you know exactly how to view the situation. And Yuja Sayamane is the restraint. So all exercise is mental control and the prana control, so that the stress is taken care of. So at Annamaya Kosha, now various practices she had told, I'll just repeat them in a quick glance at all the practices. Sukshma Vyayam are loosening the joints, So that Brahma Mudra also is one of it only. Only thing, it has to be done very slowly. Then the loosening of joints, which ensures that your spine becomes flexible and strong. We did that IRT, all the techniques. Luckily for me, Radhika has made my job easy. Then whenever we practice asanas, they have a localized effect on our organs so that it releases tensions. Shavasana should be practiced, long Shavasana, to overcome the physical fatigue. Now, why Pranamaya Kosha is very important? Because breath is a bridge between the body and mind. So if you see, pranayam is the best antidote for stress. So we have to be more, give more stress or emphasis on breathing exercises. As she said correctly, Vibhagiya Shwasan, clavicular, thoracic, abdominal is together called as yogic breathing or Vibhagiya Shwasan. Then Anulom Vilom. Then we have to also, I forgot to mention about Kriyas. Shat Kriyas come in Annamaya Kosha. So we have to practice Jalaneti, Trataka, Kapalabhati, so that automatically, because of Kapalabhati, with those exhalations, all the negativity is also expelled out of our body, and mind. The Nadi Shodhan is alternate breathing. So there is a balance so that equanimity is possible. And as she said, if you can, just as Brahma Mudra can be coupled with all these small practices also you can couple with some mantra jap. So when you do Anulom Vilom, you can just say, Om Bhur Bhuva Swaha, Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachod. So with every inhalation, how you can do it because we have time. As she said, 1 minute. Today is the 2-minute noodle. Nobody has time. Even while sitting, they are doing so many things in the office. So how we can tell them to do some things which are like, dual practices combined together to give a benefit to the sadhaka. So with this breathing practices, Brahmari is very soothing to the mind. Prana Prachardan. After the slideshow, we will practice this Prachardan Kriya. I'll just tell you, we have to raise your hands up and inhale and then pull the hand down. So inhale up and exhale down. That is called forceful exhalation. It makes the sound of a train running,
So by doing that Prachadan Kriya also, what happens every time, you can mentally think that I am energizing my body, I am purifying my body, I am energizing myself, all negativity is coming out of my body. So those mental auto suggestions also play a very important role at the Manomaya level. So just as Dr. Radhika said that Ma are very important. In fact, Omkar Dhyan and Pranava Japa are important techniques which Patanjali Muni has also given in his Yoga Darshana. So we have to think about Omkar chanting, Dharana, Dhyana, and Chitta Prasadan. Chitta Prasadan is very important to remove all those negativity, jealousy, all those we saw those factors which are troubling us, So all those anger, fear, everything are taken off if we practice Chitta Prasadan. Then a little bit of bhakti, singing bhajans, and little bit awareness in each thing we do. Otherwise, even in yoga, we are just becomes a physical exercise if you are doing yoga and the mind is elsewhere and we are not aware of our breath. Then mindfulness in eating, walking, working, even while yoga. Then yoga nidra is sleep with awareness. So in asana, we did long shavasana. In Manomaya Kosha, we can give instructions, so that automatically the body starts responding to those sankalpa, and that sankalpa becomes siddha. The Vijnanamaya Kosha, the intellectual sheath, is very important. So to sharpen our intellect, we have to read scriptures, Bhagavad Gita, Upanishad, develop positive attitude. Say some auto suggestions. For example, you have to say, stress is a part of life. Yes, accept it, because acceptance is the first step towards curing. And say, I'm increasing my tolerance level to cope with it. So I'm accepting stress, increasing my level and learning something new from every experience. So all the tension is draining away from my body. As I told you in Prachadan Kriya, I am relaxed, I am calm, I am peaceful. So all these auto suggestions also, while you are doing any practice, if you keep on giving, then it definitely changes our mindset and our psyche becomes much more calm and clearer. Then if we are having any stress related disorder, we can seek counseling from a yoga therapist or advice from any life coach, how to accept and move ahead in the life. And satsang. So we are together with like-minded people, and that is how we are keeping all the koshas balanced and in a healthy state. So now that same thing, what was affecting the hypothalamus, pituitary gland, now we see the arrows are reversed here. Now we are activating the parasympathetic system. How? Because of yoga, all our organs, are with this integrated approach of yoga therapy given at each and every kosha level, automatically the activation of parasympathetic system and the triggering of the resting and the digestive response, everything is good. And then what happens at the unseen, unexpressed, unmanifest level is the mental state. It is now calm with all the pranayam practices that we are giving, and then the emotions are not disturbed. We are intellectually, we know how to cope up with our lifestyles, and then we become spiritually oriented. So that unmanifest part, that SEM becomes so strong that it takes care of the stress or the stress related disorders or the lifestyle management that we are intending to achieve. So they say that SEM, they say, is spiritual evolution of mankind through yoga is necessary for happiness, poise, peace also you can say, and optimism. So automatically you get that positive outlook at the mental level. The same comes in your speech and the same is translated into the actions. And that is why we can see that the effects of yoga sadhana are much more beneficial to combat stress, because yoga will ensure the promotion of health by physical reconditioning with asanas and kriyas, the mind control with pranayam, the emotional culturing with mantra japa, bhakti yoga, then the sharpening of intellect by the study of scriptures, and with the antaranga yoga sadhana, one evolves spiritually. So all the 5 koshas are taken care of just because of yoga, and it ensures that holistic health by slowing down the deep relaxation at muscular level with physical reconditioning,
Then with pranayam, it is calming the mind, increasing the power, creativity, willpower. Then it is sharpening our intellect and clarity of thought at intellectual level. And it is enhancing the happiness in life, equipoise at emotional level. Finally, it at spiritual level, it will manifest the innate divinity. So as she said, Swami Vivekananda says, every individual is potentially divine, but we are unaware of ourselves. That innate divinity will manifest in all aspects of life. So to conclude, the effects of yoga sadhana will help in our all-round personality development. We become self-sufficient. The dependency on world, external aspects reduces. We get that sakshi bhav, witnessing attitude to understand what are the goal of our life is and what are the obstacles and how to overcome. Slowly, with all this antaranga sadhana, or the expansion of awareness happens and one becomes stress-free. With this, I thank you all for your patient listening. The time allotted was 15 to 20 minutes. So I tried to do justice to that. And I have to thank Dr. Shivaswarup for giving me this opportunity to share my thoughts here. Thank you very much. Thank you very much, madam. It was very useful, very informative for all of us. Yeah, I tried to condense many things in it, but I hope you all liked it. So with Very this, I useful. will stop sharing. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your great knowledge with us on types of yoga, causes of stress and symptoms of stress. Like your Yeah, session was if there is any session on meditation later on, we can do Omkar Dhyana during the Yoga International. If there is a slot to practice that Omkara Dhyana to experience as a stress management technique. yes, ma'am, sure. If it is Your possible, session I'm not insisting. your Okay, session thank you, was sir. very enthusiasm and valuable knowledge. Thank you once again, ma'am. Thank you. Thank you so much. Now I request Rachna Bamborde, IGNU student, for the presentation. Over to you, Rachna. Hello, sir. हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। You are audible. हाँ, रचना बोलिए। साउंड पर है। सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। एक्चुअली सर, ट्रेनर नहीं है हम, बट जिस तरह से हमने योगा बुक्स रीड किए हैं और योगा को जब जानना शुरू किया है, तब से हमें खुद को ऐसा बदलाव महसूस होता है कि मतलब ये चीज बहुत जरूरी है। ये चीज मतलब ऐसी है, ये अपने लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि अपनी लाइफ इसमें एग्जिस्ट करती है। इससे जितना भी स्ट्रेस होगा ना सर, सब इतना अच्छे से नॉर्मली तरीके से मतलब बहुत अच्छे से हील होता है। मैंने खुद जब ट्राई किया मेडिटेशन, जिस तरह बुक में दिया है, जिस वे में किया है मैंने, तो मुझे खुद में इतने चेंजेस लग रहे हैं, इतना अच्छा नेचर मुझे फील होता है खुद का। मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग ट्राई करें और इसे सर हर घर में होना चाहिए। और मैं जिस तरह हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। रचना, कैरियर। Rachna, you are audible. क्योंकि सर इसके अंदर वो हर चीज है जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि हर एक घर में इसको अवेलेबल करना चाहिए। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये नहीं होंगी ना सर लाइफ में, तो बहुत सारे ट्रबल्स रहेंगे। बहुत सारे जो लोग अब सिर्फ ऐसे सोचते रहेंगे, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा सर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अपने जो भी देव पुराण, गीता तथा श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध,
जो भी साधु संत है अपने, उन सभी ने इसी चीजों को फॉलो किया है, इस चीज को जाना है। साधना, कर्म योग, यम नियम, ये सब इतनी प्यारी चीज है जो कि हमें सबको इसको पढ़ना चाहिए। और ये सभी जो इन सब ने सिर्फ इन सभी साधु संत ने और इन सभी ने मतलब ये चीज किसी पर्टिकुलरली धर्म के ऊपर नहीं निर्भर की है, ये सभी बल्कि मानव जाति, ये पूरी सृष्टि के ऊपर है। जो कि अगर इसका निर्माण अगर शायद आदि शंकराचार्य नहीं करते, मतलब शंकर जी नहीं करते ना, तो इसका मतलब पहचान होती ही नहीं। मतलब ये ऐसी चीज है, अच्छा हुआ जो उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया और ये चीज लाई है। अगर ये चीज नहीं लाते ना सर, तो सर जैसा चल रहा है इंसान वैसे ही जीता था, उसको कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल इस सब चीज से अनजान ही रहता था। उन्होंने उन्होंने योगा का खुद से इन्वेंशन किया, बट फिर उनकी जो वाइफ थी पार्वती जी, उनको श्लोक के थ्रू उनको समझाया। मतलब जो भी क्या कहना है क्या कहते हैं उसको, जो भी वर्डिंग्स होते हैं ना, उसके थ्रू उनको एक्सप्लेन किया है। तो वो भी एक चीज है जो पतंजलि जी ने जो बहुत अच्छा काम किए हैं, जिन्होंने सीक्वेंसली जो बुक्स को इधर उधर से इकट्ठा करके मतलब बराबर ही सीक्वेंस वाइज में ज्वाइन किया है। उनको मैं तहे दिल से थैंक्स कहती हूँ कि अगर वो ये चीज नहीं करते ना सर, तो लिटरली मतलब हम ये सब कुछ जान ही नहीं पाते सर। मतलब ये चीज इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है ना, सच में मुझ में खुद में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती सर। और मैं ये आगे से लोगों को बोल रही हूँ कि तुम करो, तुम ये चीज करो सर, क्योंकि सच में इससे जो भी फायदा हो रहा है ना, ये आगे चल के अपने जो फ्यूचर में जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए। सबसे मेन जो है स्ट्रेस, जो जो मेंटली जो इतने ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे इतने ज्यादा सुसाइड चल रहे हैं, इतना मतलब फालतू से रीजंस के लिए, मतलब लोग खुद की लाइफ की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं सर। मतलब खुद जो उनको जीवन मिला है उसको सब ऐसे व्यर्थ कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। और मैं चाहती हूँ कि ये हर घर में हर, इसलिए मैं भी खुद आगे से एडवाइस कर रही हूँ लोगों को कि जी हाँ ये सब चीज करिए, ये चीज करिए। नहीं आता होगा तो मेरे पास आइए, मेरे पास बुक्स है, मैं तुमको फॉलो करा के मैं तुमको बताऊंगी ऐसे करो वैसे करो। सच में सर ये चीज के लिए तो मैं पहले मैं सोचती थी कि करूँ कि नहीं करूँ, बट पहले मुझे ये लगता था कि सिर्फ ये एक्सरसाइज जैसा है। मतलब पहले टीवी शोज में रामदेव बाबा जी दिखाते थे एक्सरसाइज, तो बट वो चीज नहीं है, वो इससे भी बढ़ के है, जो कि बहुत जरूरी है हमें। इसमें यम नियम जो कि अपने को बताता है कि पूरी बॉडी में अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साधना इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। इस साधना से जितने भी निगेटिविटी है, जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स है, वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली, नहीं पता कैसे क्या क्रिएट होते, कैसे क्या स्ट्रेस रिलीफ होता है, मुझे उतना डीपली नहीं पता। बट हाँ, जिस तरह से मैंने किया है और मुझ में चेंजेस आया है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो अपना यम नियम है, वो उसमें सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, अपिग्रहण, ये सब चीज है। और जो नियम है जो कि फुल बॉडी को क्लीन करना है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। और जो मेंटली स्ट्रेस को रिलीज भी करता है एक टाइप से, जो ध्यान भक्ति काइंड है। तो जो भक्ति योगा है सर, वो भी इतना ज्यादा रिलीफ देता है। मैं सच में वो चीजें करती हूँ सर रोज, मेरा इतना शांत
नेचर हो गया है ना, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं ये चाहूंगी सर, ये चीज सभी लोग करें और सभी के घर में ये होना चाहिए। ये पर्टिकुलर ये चीज है जरूरी सर। ये हम हम कोई होते नहीं है इसको एग्जिस्ट करे या ना करे, क्योंकि सर हम ही है जो मतलब इसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए हमें। ये इतनी इम्पोर्टेंट और पावरफुल चीज है सर। थैंक यू सर। मुझे इसके बारे में ज्यादा और पढ़ूंगी तब और नेक्स्ट सेशन में बोल पाऊंगी, बट जब तक मैंने जाना है, जितना जाना है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और मैं चाहती हूँ कि इसको हर एक घर में छोटे बच्चों से लेके सभी को मतलब ये चीज करना चाहिए, क्योंकि जब अगर छोटे बच्चे अभी से शुरू करेंगे तब जाके उनकी जो मेंटल स्टेट है, जो फिजिकल बॉडी है, जो उनका सोचने का तरीका है, द वे ऑफ थिंकिंग उनकी बहुत चेंज हो जाएंगी सर। और जिस तरह से आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी है बड़े थोड़े, जो उनका जो तरीका है, उनका जो मतलब आंसर करने का नजरिया है या लोगों को देखने का जो नजरिया, सब कुछ चेंज हो सकता है सर। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा है थैंक यू रचना, सर। बहुत अच्छा बोला है। थैंक यू सर। योगा का आपने बहुत अच्छा बोला है। अब जैसे आपको अच्छा लगा स्प्रेड कर दीजिए आपका आसपास में भी, ठीक है? वेरी गुड। यस। Thank you, Rachna, for sharing your wonderful experience. Now I request Ritu Sahu, IGNOU student from Pune Center, to share she is Nagpur student only from from Pune to share your experience. Over Hello. to Ritu. Yeah. Hello. You can switch on video also if you can. 1 second, sir. ठीक है, करिए। Hello, sir. Hello, everyone. Today, I would like to throw light on the topic yoga as a stress buster. Sir has given me an opportunity to speak about it. So I'll just try. In today's world, like we see yoga as an holistic approach to the health. That National Institute of Health also considered yoga as a complementary and alternative medicine. So, yoga is a form of a mind-body fitness program which involves the breath, which involves the self-awareness, which involves the self-awareness, which involves the energy, which involves the muscular activity. So, like in today's world, also like we say that there are many stresses, and because of the stress, we get like our heartbeat increases, our blood pressure increases, our behavior changes, our communication becomes more aggressive. We see our face turned red. So all these are kind of the stress response that our body make. We make all this all stress response are due to the like the hormones, and it is well mediated through the link between the hormones and the nervous system that control our body functions. So the nervous system and the hormones are the part like which controls all these functions. So nervous system in our body is of two types. One is the somatic nervous system and another is the autonomic nervous system. So the somatic nervous system is like which control the voluntary functions of our body, like walking, talking, breathing, all these functions, like which are on our will. And like the autonomic nervous systems is like it controls the involuntary functions of our body, like the heartbeat, like the peristalsis movement, like the sweating. All these functions are controlled by the autonomic nervous systems. So these two systems which control our stress responses and as well as the hormones. So the autonomic nervous system has the two limbs, the sympathetic part and the parasympathetic part. These two limbs are like opposite in function. In our body, every organ that is means most of the organ in our body is connected with this autonomic nervous system. It means every organ has two nerves that is going inside it. One is the sympathetic nerves and one is the parasympathetic nerve.
if we activate that parasympathetic nerve, it will increase the heartbeat, and if we activate the sympathetic nerve, it will decrease the function of that organ. Suppose if it is in the heart, if we activate the sympathetic nerve that is going to the heart, it will increase the heartbeat. And when we will activate the parasympathetic nerve that is in the heart, then it will decreases the heartbeat. So most of the organs in our body is connected with this autonomic nervous system. That is the two nerves. One is the sympathetic and one is the parasympathetic. So like these two are opposite in actions. The sympathetic nerves are more stimulating in nature, and it is also important for our body because to cope up with the emergency situations, like we need the glucose, so it increases the metabolic rate, and it increases the glucose in the blood. So like energy can be provided instantly. It also increases our heartbeat so that the more oxygen can be supplied to the cells. It increases our blood pressure. All these things are made so that we can cope up with the stresses. We can cope up with the emergency situation. We can cope up with the stress. But the parasympathetic part is like more calming and soothing in nature. It decreases the heartbeat. It decreases the peristalsis movement. It decreases the endocrine functions. It increases the digestion. All these things are done by the parasympathetic nerves. So, and the other part is like the hormone. Hormone also controls our body part. Like the main is like the hypothalamus. Hypothalamus is an organ that is buried deep inside our brain. So it is a main director of the endocrine glands, we can say. Like whatever all the things that is going on inside our body, all these things are passed to the brain, and that is it passed to the hypothalamus, and then hypothalamus decides what measures have to be taken for that particular cell and what the cell has to do. So it is we can say it is the hypothalamus which decides what the cell has to do. So, and this hypothalamus, what it does, it secretes the hormone that controls the pituitary gland, and pituitary is the master gland which controls all the endocrine glands. So and the hypothalamus controls this pituitary gland. All these hormones and these sympathetic, parasympathetic nerves, they control the body function and they control the stress responses. Yoga research has found out that while doing yoga helps to activate the parasympathetic part of the hypothalamus, and it inhibits the sympathetic part of the hypothalamus, which when it activates the parasympathetic part, then it will be obviously kind of more soothing and more relaxing. And and likewise the breathing, that yoga involves the breathing exercises like anulom vilom, and also this also is a kind of very kind of relieving our stress, because in yoga we have nadis. One is the Ida Nadi and one is the Pingla Nadi. Ida Nadi, it is the left nostril, and Pingla Nadi is the right nostril. So when we breathe through the left nostril, we activate our parasympathetic part, and when we breathe through the right nostril, we activate our sympathetic part. So when we are doing anulom vilom, it is like we are balancing both the parasympathetic and sympathetic nerves, and this parasympathetic and sympathetic nerves controls all our organs, like how I explained earlier. So like breathing through the nostril, like how it activates the parasympathetic and how it activates the sympathetic nerve, and how it helps is like when inhalation, like when you are exhaling more, like inhalation is associated with the sympathetic activity, and exhalation is associated with the parasympathetic activity. So when you are inhaling, your sympathetic part will get activated, and when you are exhaling, your parasympathetic part will get activated. So when you are exhaling more, it means more the amount of parasympathetic part will get activated, and you will get the more soothing responses in your body, like your heartbeat will decrease, your peristalsis movement will decrease, your heart blood pressure will decrease, your digestion will increase. So all this activity that
when you will get when your parasympathetic part will get activated. So in this way, like yoga helps to fight the stress. This is what I found. Thank you. Very nice, Ritu. You have done excellent job. So nice. Thank you so much, sir. Yeah, nice. Thank you, Ritu, for sharing your deep knowledge about breathing and how to relax, how to remove stress. Thank you once again. Yeah, thanks. Now I request Shilpa Khandelwal, IGNOU student from Amravati, to share her experience. Over to you, Shilpa. Namaskar, sir. Thank you for giving me this opportunity, and afternoon to all dignitaries. सर, हमको अलका मैम एंड राधिका मैम ने खूब डीप नॉलेज दिया है और काफी इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया है, स्ट्रेस की क्या कनेक्शन होता है इसका दिमाग से, हमारी बॉडी से। तो मैं अपने विचार रखना चाहूंगी इसमें। जो आज का युग है, आज का जो आधुनिक युग है, इसमें एक योग विज्ञान ही ऐसा है जो हमारे शरीर और मन को कनेक्ट करता है और शारीरिक एवं मानसिक तनाव से निपटने के लिए केवल इसी में ही बहुत सारी योग ने ही हमें बहुत सारी टेक्निक्स दी है और टेक्निकों से जोड़ता है हमको। यदि हमें मनोवैज्ञानिक संबंधी कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो हमको केवल योग से ही मिलेगा, क्योंकि आज हम घर से बाहर कदम रखते हैं या सुबह उठते ही हैं तो हम एक तनाव का ही शिकार होते हैं या उसका ही सामना करते हैं। और योग में ही है कि हम अपने बॉडी के साथ साथ अपने मन को कैसे कंट्रोल रखें, क्योंकि तनाव का सीधा संबंध हमारे मन से होता है और मन के बाद ही उसके इफेक्ट, जैसा तनाव का लेवल होता है एंजाइटी और डिप्रेशन, उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज आती है स्ट्रेस, जो एंजाइटी और डिप्रेशन जो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। उस पे हम कैसे अपने मन से नियंत्रित करके आगे जो भी समस्याएं होती है हमारे रोज के जीवन में, उसका कैसा हम सलूशन ढूंढें। तो बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है जिसमें संधि चालन होता है, जिसमें हम श्वास लेते हैं और जोड़ों की मूवमेंट करते हैं, और श्वास व्यायाम होते हैं, प्राणायाम जो हमारे प्राण और मन को जोड़ते हैं। उसके बाद आसन हैं बहुत सारे जिससे हम अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। प्राणायाम से हम अपने मन और प्राण पे काम करते हैं। और इन्हीं सभी चीजों में और एक सबसे पहली चीज जो स्ट्रेस का जो मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग हमारे पास सॉल्यूशन है, वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन ही इस युग में एक रिसर्च के द्वारा पता पड़ा है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग सॉल्यूशन जो है तनाव का, वो है मेडिटेशन। और बहुत सारी चीजें आपने सुनी, सर ने, मैम ने बताए हैं, दोनों मैम ने बहुत ही अच्छे से बताया है। पूरी हमारी बुक में भी जो लिखा हुआ है, हमारे पौराणिक ग्रंथ या भगवत गीता बोल लीजिए, काफी इस पे जो प्रकाश डालते हैं वो यही डालते हैं कि हम अपने मन पे कैसे कंट्रोल कर सके। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है कि हम अपने मन पे कंट्रोल करके सारी दुनिया की जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है उससे फेस कर सकते हैं। स्ट्रेस तो एक छोटे से बच्चे को भी शुरू हो जाता है। छोटा सा बच्चा को जब स्ट्रेस होता है सर, वो नेल बाइटिंग करने लगते हैं। तभी हमको देखने में समझ में आता है ये बच्चे को स्ट्रेस काय का रहेगा, अभी तो इसने जीवन शुरू किया है। फिर तो हम बड़े लोग हैं, हमारा स्ट्रेस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है कोई भी बात को लेकर। जब हम किसी से बात करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम डिस्टर्ब हो चुके हैं। और स्ट्रेस के दौरान तो फिजिकली हमें चेंज आते ही हैं। बॉडी हमारी जो भी हमारे इफेक्ट होते हैं बॉडी में, वो तो कवर करने के लिए जैसे बॉडी में जो इफेक्ट होते हैं,
हमारा रेस्पिरेटरी श्वसन जो क्रिया है वो तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करती है, नींद नहीं आती है। तो ये बॉडी का हो गया। अब मन से ये होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारी जो पर्सनालिटी है वो खराब होती जाती है, हम चिड़चिड़ा हो जाते हैं, किसी से गलत व्यवहार करते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं और जल्दी जल्दी में कोई भी काम कर सकते हैं, ईर्ष्या वाला गुण आ जाता है। तो इन सब पे ही काम करने के लिए हमको योग में ही इसका सलूशन है। इस मॉडर्न युग में छोटे छोटे बच्चों में नशे की आदत हो जाती है। और एक बात और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा है और अनुभव किया है सर कि मोबाइल पे दिन भर बच्चे रहते हैं और कोई भी आदत सीखने से पहले वो इस पे विचार नहीं करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो इसका जब मुझे दोनों मैम का जब मैंने लेक्चर सुना तो मैंने यही उसमें ध्यान दिया कि बच्चों का जो विज्ञानमय कोश है वो डेवलप नहीं हो रहा है। बच्चों का विज्ञानमय कोश डेवलप नहीं है, उसके कारण उन्हें पता नहीं कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये चीज सही है या गलत है, हमको इसका अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के जनरेशन में आज के जनरेशन को ये बात सीखनी चाहिए और इसके लिए ये योग बहुत ही हेल्पफुल है। इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। और मैम ने बताया कि भगवत गीता में हमको इसका सलूशन मिलेगा। जी हाँ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हम अपने मन को डाइवर्ट करें, क्योंकि स्ट्रेस ही का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। हमने किसी की चीज देख ली, हमको स्ट्रेस आ गया, हम ईर्ष्या में चले गए कि हमको वो चाहिए, लेकिन वो साधन को पा नहीं सकते हम, क्योंकि हर चीज हमारी कैपेसिटी में नहीं होती। हर चीज को ले नहीं सकते, फाइनेंशियली, सोशली, किसी भी तरीके से। तो हमको वो संतोष रखना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये बताया है कि संतोष ही परम सुख है। उसके बाद योग पातंजलि योग सूत्र में बताया है कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात कि अविद्या भी होती है जो हमें जो व्यसन है उससे मुक्त नहीं होने देती है। उसके लिए हम ओम का उच्चारण करें और तप करें और तप की प्रैक्टिस करें। और सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया है कि प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास, मतलब हमारे मन को हम डाइवर्ट करें। यदि हमारा मन हिंसा और घृणा की तरफ जाता है तो हम उसे प्रेम और कंपैशन वाली फील्ड में लेके जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो योगा जो चीज है ये हम हर सादे व्यक्ति के पहुंच में है। इसमें हमें कोई इतना पैसे खर्च करना नहीं पड़ता, ये कम लागत का ट्रीटमेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये समझ में आई है कि हर कोई कर सकता है, हर कोई इजीली से कर सकता है, थोड़ा समय निकाल के। इसलिए ये इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे लोग कि हर चीज के लिए जब एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है तो तुरंत मेडिकल में जाते हैं और उसको लेके आ जाते हैं, दवाई खाते हैं और ठीक है। लेकिन ये योग जो है केवल हमारे हाथ में है। और अभी तो इतनी टीवी में भी इसके बारे में इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है। पहले बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ रही है कि हम देख के भी सीख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छे स्वास्थ्य में ही एक अच्छे मन का विकास हो सकता है। और ये स्ट्रेस वाली जो अपना जो खास सब्जेक्ट है हमारे बोलने का, तो इसमें सबसे आज के मॉडर्न युग में जैसे योग वशिष्ठ ने भी बताया है। और खास तौर पे मैं इसका श्री रविशंकर जी के सुदर्शन क्रिया का जिक्र करना चाहूंगी। ये भी लोगों को बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, इसके बहुत सारे टीचर्स हैं। तो उसमें भी ये कहा गया है कि
एक स्ट्रेस से हमारे को निजात पाने का बहुत ही अच्छा ये सुलभ आसान तरीका है, जिसमें यौगिक श्वास की तकनीकें हैं, जिसमें चक्रीय क्रम में धीमी गति से पहले सांस ली जाती है, फिर तेज गति से सांस ली जाती है। आधे घंटे का केवल टाइम देना पड़ता है और काफी हमको दिन भर रिलीफ मिलता है, हमारा माइंड फ्रेश रहता है, बॉडी काफी एनर्जेटिक रहती है और इससे बहुत सारी चीजों पे हमारी बॉडी में बेनिफिट मिलता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बीमारी के दरमियान होने वाली स्ट्रेस, बीमारी के बाद होने वाले स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस पे सफलता पाने का, स्ट्रेस से मुक्त होने का ये बहुत ही अच्छा साधन है, जिसमें जो सुदर्शन क्रिया है वो 3-4 योग मुद्राएं और आसन से शुरू होती है। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज रहती है इसमें बहुत सारी, और इसको करने से काफी रिलीफ मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई है, उसके बाद ये हमारी किताब में खास सिलेबस में दी गई है सर ये, और मैंने खुद ने किया है और इसको अनुभव भी किया है। इससे काफी बेनिफिट्स हैं हमको, और इससे बहुत बहुत लेवल तक हम अपना स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, और बाकी फिजिकल प्रॉब्लम को भी हम दूर कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुलभ है, और योग जो है बहुत ही मतलब इसमें हमको कुछ खर्च करना नहीं पड़ता, और काफी इसके हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। दिन भर हम तर ताजगी से और ज्यादा एनर्जी के साथ में रह सकते हैं, और जब हमारा दिन भर ज्यादा एनर्जी के साथ में रहते हैं, तरोताजा रहते हैं, तो हम हर काम को अच्छा कर सकते हैं, हर काम में एक परफेक्ट टाइम दे सकते हैं, हर रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट करके रिलेशनशिप को भी अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं, और रोज का जीवन अच्छे से जी सकते हैं। अच्छे जीवन जिएंगे और अच्छे विचार आते हैं उसमें, तो हम आगे और प्रगति करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी सर कि योग को अपनाइए और इसकी नई नई सभी को टेक्निक सीखे, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी काफी इस पे आगे काम कर रही है, और हमारे बच्चों को भी, बूढ़ों को भी ये सब सिखाना चाहिए, और इसका फायदा जन जन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीका है। मैम ने बताया, राधिका मैम ने, जो श्वास लेने का, उसको भी मैं अपने डेली रूटीन में अपनाऊंगी, और जहां तक हो सके इसका मैं प्रचार प्रसार करूंगी। और सबसे बढ़िया बात, यदि हम 15-20 मिनट इसमें फिजिकल एक्सरसाइज, आसन और संधि चालन करके हम 10 मिनट का केवल मेडिटेशन करते हैं, या ओम का उच्चारण करते हैं, या बुद्ध की प्रतिमा पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमको काफी इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। इतना ही मैं इसमें कहना चाहूंगी। धन्यवाद सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत अच्छा किया है शिल्पा जी, सो नाइस ऑफ यू। और हमको तो ये अच्छा लगा कि शिल्पा जी और रितु और रचना, आप तीनों इग्नो का मटेरियल अच्छे से यूज किया है, और हमको अच्छा लगा है। आपके आसपास में भी स्प्रेड कर दीजिए योगा का फायदा। जी सर। और थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारा कोलीग है डॉक्टर DR शर्मा पुणे से, 2 शब्द कहिए शर्मा जी, इफ यू आर देयर। DR शर्मा। और सभी को ये भी एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये प्रोग्राम पूरा आपको इग्नो नागपुर के यूट्यूब चैनल में और फेसबुक में भी अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्डेड वर्जन। आप अभी नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं। हाँ शर्मा जी, बहुत अच्छा सर। अभी आप प्रोग्राम के शुरुआत से लेकर के 2 एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं, और दोनों एक्सपर्ट्स इतना अच्छा से बताए हैं, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंद कोशों को लेकर तन मन को कैसे एक करें, मन को कैसे काबू में ले ले, और कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं, इसके बारे में व्याख्यान बहुत ही अच्छा ढंग से किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो एक्सपर्ट्स आए हैं उनके लिए मेरे नमस्कार बोल दीजिए। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच शर्मा सर।
Now I would like to conclude today's program. I request Dr. Venkateshwarlu sir, Assistant Regional Director, Nagpur, to propose vote of thanks. Thank you, sir, for giving this opportunity. I would like to propose vote of thanks on behalf of Regional Center Nagpur and my own behalf of. So today we are organizing yoga as a stress booster. So stress buster. So this program was successfully completed. So now I thankful to our regional director, Dr. P. Surup sir, and also I'm thankful to our Pro Vice Chancellor, Professor Satyakam sir, and also I'm very much thankful to Professor S.K. Mahapatra sir, Pro Vice Chancellor, IGNOU New Delhi, and also today experts, Dr. Radhika Sarvesh Wazalwar, Nagpur, for giving wonderful uh, speech on yoga. Thank you, madam. And also today expert, Dr. Alka Mayur Vivankar, Mumbai. She was also expressed good opinion on yoga, and also she traces out all the activities about the yoga. So I am very much thankful to madam, and also our students, Rachna Bambodi, Nagpur. She was also present good speech on yoga, and also Ritu Sahu, our student at Pune. She was also presented good presentation on yoga, and also Shilpa Kandelwal, Amravati. She was also our student. She was expressed good opinion about yoga and how to practice this yoga in our आसपास पब्लिक में ये कैसा प्रमोट करना है, ये भी अच्छा है. And also today program organizer Dr. Tushar Tale, he was conducted this program very smooth and very efficient. I am very much thankful to our regional center staff, and also I am very much thankful to our co-regional centers, Dr. D.R. Sharma, Pune, and also Dr. Krishna Rao, Mumbai Regional Center. I am very much thankful to each and every participant and our students and other community. So thank you very much. Thank you one and all for your valuable participation in one day national webinar. With this word, I would like to wind up the webinar. Jai Hind, Jai Bharat.